amino acids. I had actually finished with serine also, but I think okay. I'm starting, bachcho. Okay, I'm starting now. Stop typing and start listening. I know it's boring for you sitting at home and just staring at the screen, but these lectures are important. Try and generate some interest in these lectures. I'm trying to make it simple. I know it's boring. I know it's very boring. I've had a tough time preparing the lectures. I know you are also having a tough time listening to all these things. But please bear with me, okay? So we'll start with metabolism of serine again. It will be a small recap. I have introduced small little information here and there, so I would like to share that with you. So as you know, serine is a non-essential glucogenic amino acid. It has its hydroxyl group in its R. ये तो amino acid का general structure है ना? ये This is the general structure of every amino acid. The only difference between any two amino acids is the difference in the R group. So serine का R group क्या है? हाइड्रोक्सीमिथाइल. ठीक है? ओके, डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है भाई? मैं तो बहुत अच्छे से बोल रही हूँ और यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मेरे चेम्बर में. अभी ठीक है? माइक भी ठीक है मेरा. Vatsala, has it joined? Is there an issue with the mic? Okay, I'm carrying on. So serine is a non-essential glucogenic amino acid, and as part of its R group, it has a hydroxy group. This is a hydroxymethyl group. Okay, and it can be synthesized from actually glycine and serine, they are interconvertible. They can keep exchanging. You can keep hopping from glycine to serine, right? And also, the major source of serine is the phosphoglycerate and catabolism. Since it does not undergo transamination. Thank you, Rameshwar. बच्चे परेशान कर रहे हैं मेरे को. बच्चों तो मेरी रैगिंग कर रहे हो हैं? तुम लोगों की रैगिंग नहीं हुई तो मेरी करोगे तुम? क्या बात है? क्यों रैगिंग कर रहे हो मेरी? What? No, ma'am. No ragging? Or what? Okay. So listen, I'm not ragging you, so you don't drag me back. Fine? I'm trying to be nice to you. So be nice to me. Okay. Since you know serine cannot undergo transamination, so उसका metabolism कैसे होता है? It undergoes dehydration and then deamination to form pyruvate. Let's see how. We have had this slide before. It's a long list of metabolic roles for serine. As I told you, serine can form glycine and vice versa. Serine also is a source of one carbon group, especially methylene. It is also involved in synthesis of alanine and histidine because the carbon skeleton is same. Only the hydroxyl group is different. Alanine का क्या है? Alanine का यहाँ पे CH3 है. ठीक है? अगर एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दें तो serine बन जाएगा, right? Histidine में क्या है? एक हाइड्रोक्सिल सल्फाइड्रिल ग्रुप लगा देंगे. इनफैक्ट सेलिनोसिस्टीन जब बनाते हैं, which is the 21st amino acid, में कार्बन नाम है सेलिनोसिस्टीन because सेलिनोसिस्टीन contains a sulfur moiety, right? But the skeleton for सेलिनोसिस्टीन is serine. ठीक है? सेलिनोसिस्टीन में क्या है? O की जगह O of हाइड्रोक्सिल. हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो O है, इसको रिप्लेस कर देते हैं सेलेनियम से, Fe से.
That is a co-translational modification. Co-translational matlab during the process of translation. Translation is synthesis of proteins based on the information on the mRNA, messenger RNA. You will be doing molecular biology subsequently, so you will do all this in detail. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है जब ट्रांसलेशन हो चुकी, प्रोटीन बन चुका, उसके बाद अमीनो एसिड में जो माइनर मॉडिफिकेशन होती है उसकी भी एक लॉन्ग लिस्ट है, आपको बताई जाएगी. उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं. उसमें जो मॉडिफिकेशन होके जो नया अमीनो एसिड रेजिड्यू बनता है वो नया इज नॉट काउंटेड एज अनदर अमीनो एसिड, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अमीनो. को ट्रांसलेशनल है ये, इसलिए हम सिलीनोसिस्टीन को 21st अमीनो एसिड का दर्जा दे रहे हैं. ठीक है, ओके. So also involved in synthesis of choline, sphingosine, other phospholipids, okay, purines and deoxythymine. यहाँ पे क्या कर रहा है वो कार्बन ग्रुप donate contributes the skeleton for silicylcysteine. Also involved in regulation of enzymatic. Hydroxyl group is involved in phosphorylation and dephosphorylation at specific serine residues in the enzyme. So involved in covalent modification of enzymes and regulate the enzymatic activity. And it is one of the most frequently found amino acid at the active sites of enzymes. So there are many enzymes which are known as serine proteases. Some enzymes are known as cysteine proteases. क्यों उनको ऐसे बोलते हैं? क्योंकि उनकी एक्टिव साइट पे serine है या उनकी एक्टिव साइट पे cysteine, which is involved in the actual reaction between the substrate and the whatever the reaction which is happening is actually happening at the active site, and the active site contains serine. तो ये serine protease हो जाएगा. अगर active site contains cysteine, that will be a cysteine protease. ठीक है. अगर आपको याद हो जब हम digestive enzymes पढ़ रहे थे तो protein digestion में जो enzymes थे they were serine protease. Please go back and check. Okay. चलो. Now serine is also involved as therapeutic agents. So serine analogs, synthetic serine analogs are used as therapeutic agents, like azaserine, it is acting as an anti-cancer drug, and cycloserine can be used for treatment of tuberculosis as part of the anti-tubercular treatment, ATT. अभी भी डिस्टर्बेंस है क्या बच्चों? तुम लोगों की तरफ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? हाँ, अरे अरे इतने सारे यस मैम आ गए. अच्छा, सुमित को तो नेग्लिजिबल लग रहा है. वॉल्यूम, अच्छा ये कौन है? आदत सी हो गई है. ओ माय गॉड, ये आप शायर हो क्या बेटा? मैम कंटिन्यू, अब आदत सी हो गई है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय माय. वॉल्यूम क्यों कम है बच्चे? आई एम टू स्पीकिंग एट माय फुल वॉल्यूम. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. अब मैं बीच में स्क्रीन देख रही हूँ, बीच में मैं अपना फोन देख रही हूँ तुम लोगों के मैसेजेस पढ़ने के लिए, तो मेरा मुंडी तो हिलेगी ना इधर से उधर, तो मेरा हाथ भी हिल जाता है. मैं क्या करूँ, रोबोट थोड़ी हूँ. तुम लोग मैसेज तभी करो जब बहुत ही बुरा हाल हो. अगर आपको सुनाई दे रहा है एंड यू कैन मैनेज विद दैट वॉल्यूम एंड डिस्टर्बेंस, प्लीज डोंट मैसेज मी. ओके, चलो. आई एम ट्राइंग टू कीप माई हैंड स्टेडी सो दैट डिस्टर्बेंस इज minimal. Okay, now how, as I told you, synthesis of serine from phosphoglycerate is the major source of serine. So the enzyme phosphoglycerate dehydrogenase is an important enzyme here, which is bringing about the conversion to serine.
ओके, तो फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोहाइड्रोक्सीपाइरुवेट बना, उसके बाद फॉस्फोसीरीन बना, जिसके बीच में ग्लूटामेट इज द अमाइनो ग्रुप डोनर विल बी ग्लूटामेट. ओके, फॉस्फोग्लिसरेट तो एक कार्बोहाइड्रेट हुआ, राइट. ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप, ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप देगा तो वो फॉस्फोसीरीन बन जाएगा. फॉस्फोहाइड्रोक्सीपाइरुवेट से फॉस्फोसीरीन बन गया बिकॉज अमाइनो ग्रुप आ गया, और फॉस्फो ग्रुप हटाएंगे तो सीरीन बन जाएगा, राइट. Okay, now serine is also involved in the synthesis of so many phospholipids. Start with this is choline. Choline बनाने के लिए हमें बहुत सारे मिथाइल ग्रुप चाहिए जो कहाँ से आएंगे, SAM से आएंगे. So serine undergoes a series of reactions. First, it is converted to ethanolamine by decarboxylation. और जहाँ भी decarboxylation होती है, PLP is right there. ठीक है, pyridoxal phosphate. फिर इथेनॉलमीन जब बन जाता है, there is series of methyl group transfers to ultimately form choline, which is trimethyl ethanolamine. और हर बारी जो मिथाइल ग्रुप डोनर है वो है SAM. Okay. Okay, next, sphingosine again. Serine will attach with a fatty acid to give you a sphingosine, aminolipid. Okay. Since it does not undergo transamination to form glutamate, what happens? It undergoes conversion to pyruvate, and the enzyme is serine dehydratase. साथ में अमोनिया ग्रुप बन रहा है, अमोनियम आयंस आर कमिंग आउट, बट हम एंजाइम को डिहाइड्रेटेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले डिहाइड्रेशन हो रही है, फिर डीएमिनेशन, और ऑफ कोर्स पीएलपी इज राइट हियर टू ब्रिंग अबाउट. जब भी अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर होगा तो शिफ्ट बेस बनेगा, राइट, और शिफ्ट बेस बनाना है तो पीएलपी हैज टू बी देयर. ओके, बहुत माइल्ड रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, नॉट माइल्ड, रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, दो ही हैं. डेफिशिएंसी ऑफ these two enzymes, phosphoglycerate dehydrogenase and phosphoserine aminotransferase. इनकी डेफिशिएंसी होगी तो सीरीन नहीं बन पाएगा. सीरीन नहीं बन पाएगा तो congenital microcephaly, mental, कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो एक जनरल प्रॉब्लम्स तो होंगी ना, मेंटल रिटार्डेशन, सीजर्स एंड माइक्रोकेफेली हो सकती है. क्या करेंगे? डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफ सीरीन देने पड़ेंगे, साथ में ग्लाइसिन भी देना पड़ रहा है क्योंकि सीरीन एंड ग्लाइसिन आर इंटरकन्वर्टेबल. दैट इज व्हाई. This is an overview of serine, what all serine can do, what all serine does in our body. Okay. Okay, last time I had said that I'm not starting with threonine, but I realized it's better to study threonine along with serine because it is also a hydroxyl group containing amino acid, though it is an essential amino acid. And since it has hydroxyl group in its structure, it will be hydrophilic. So it is an essential hydroxyl group containing amino acid, hydrophilic in nature, and it only differs from serine by having an extra methyl substituent in place of one of the H atoms on the beta carbon. I have shown you here the difference, structural difference between serine and threonine. तो ये serine है जिसमें दो हाइड्रोजन आयंस हैं यहाँ पे. देखो बीटा कार्बन कैसे हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट. ये ओल्डर सिस्टम ऑफ क्लासिक ऑफ नंबरिंग द कार्बन एटम्स है. हम अब करते हैं 1 2 3. पुराने जमाने में क्या होता था, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको कोई नंबर नहीं बोल सकते. द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप विल बी टर्म्ड एज
alpha. So this is alpha, this is beta. So the beta carbon पे यहाँ जो दो H ions हैं, one is getting replaced by the methyl. Then it becomes threonine, right? Okay. So hydroxyl group जो है, it is involved in covalent modifications. Threonine, as with the serine, it is also catabolized to pyruvate. Again, it does not undergo transamination, but it also forms acetyl-CoA and glycine as intermediates. Okay, so it is both glucogenic as well as ketogenic. Threonine is cleaved to acetaldehyde and glycine by threonine aldolase. Threonine aldolase is another pathway by which glycine is being synthesized from threonine. I hope you remember we had done it in the last lecture. So as I said, it does not undergo transamination, so it undergoes deamination but before that it undergoes dehydration. Dehydration followed by deamination, enzyme will be threonine dehydratase. Of course, it will require PLP. And it is both glucogenic as well as ketogenic because it is synthesizing both pyruvate as well as यहाँ पे alpha ketoglutarate and acetyl-CoA या acetoacetate. Okay, this is one of the sources for production of glycine. So threonine is cleaved by threonine aldolase, requires PLP for this function to form glycine and acetaldehyde. Acetaldehyde is a precursor for acetyl-CoA, so it becomes ketogenic. Threonine becomes ketogenic as well. So acetaldehyde can be oxidized to acetate, converted to acetyl-CoA. प्रीवियस रिएक्शन में मैंने दिखाया था डिहाइड्रेटेज से अल्फा कीटो ब्यूटारेट बनेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी बन सकता है, उसके बाद पायरुवेट भी both glucogenic and ketogenic. This was about the hydroxy or hydroxyl group containing amino acids. ठीक है. Now going on to the next amino acid, alanine. This we had done last time. I will kind of rush through it. So you know it is a major glucogenic amino acid, apart from being a component of so many polypeptide chains, synthesized by transamination of pyruvate. Or breakdown भी होगा तो it will go back to pyruvate. Enzyme, as you know, will be alanine transaminase. Also involved in glucose. It's an important function of alanine involved in glucose-alanine cycle or Cahill cycle. Normally the components of proteins in our body are in alpha configuration. ठीक है, सारे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनाते हैं दे आर इन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, मगर फ्री अमाइनो एसिड में बीटा एलानिन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ pyrimidine, especially cytosine and uracil. So beta alanine, as being a free amino acid, it is involved in the synthesis of coenzyme A, carnosine and anserine. And of course it goes back to pyruvate by transamination. The enzyme will be same because it catalyzes a reversible reaction. This is the structure of alanine, and this is the R group of this amino. Okay. This is an important cycle of which alanine is a part, Cahill cycle, where alanine is released from the muscle, goes to the liver, and this is the transport form. Alanine is the transport form of ammonia from the muscle to the liver, where alanine is deaminated. Ammonia released from alanine is used for urea synthesis. Alanine is converted to pyruvate, which is used for gluconeogenesis. Glucose is formed, which comes back into the blood, taken up by the muscles for energy production. We had done this last time also. Now let's start with the acidic amino acids.
aspartate and its amide asparagine, जो हमने last time किया था. I think I can skip it. I think I will skip it. Okay, let me start. मैंने एक चीज ऐड की है यहाँ पे. Aspartate synthesized by transamination of oxaloacetate. Enzyme will be aspartate transaminase. Alanine transaminase and aspartate transaminases are an important example of non-functional plasma enzymes. इसका क्या मतलब है? Non-functional plasma enzymes मतलब ये plasma में present है, but they do not have any function in the plasma. And the only thing that they the function that they have in the plasma is to tell you about the health of the tissues they are coming from. These enzymes are specific to certain organs or certain tissues in our body. And if the levels of these enzymes increase in our blood, this means that there is some damage to that particular organ or that particular tissue. For example, ALT and AST are coming from hepatocytes. AST can also come from the cardiac muscle. So if they are increased in the blood, they tell you that there is something wrong with these specific organs. Okay. Oxaloacetate को amino group कौन दे रहा है? Glutamate. जिसके बाद वो aspartate बन रहा है. And of course, aspartate की breakdown के बाद वापस oxaloacetate ही बनेगा. Amino group will be taken away. So it contributes an amino group. It contributes an amino group during synthesis of urea. Also contributes to the synthesis of purines and pyrimidines. This you will be doing when we start with the chemistry and metabolism of purines and pyrimidines. Another important function of aspartate is it is involved in malate aspartate shuttle or transferring reducing equivalent NADH from the cytosol to the mitochondria for oxidation. If you remember, you have two types of shuttles for transferring NADH from the cytosol to the mitochondria. One is a glycerophosphate shuttle, the other one is this malate aspartate shuttle. And the energetics in both the shuttles is different because this, malate aspartate shuttle is attached to NADH. It gives off its NADH. The reducing equivalents are given off to NADH itself. Whereas in glycerophosphate shuttle, the reducing equivalents are passed on to FAT. There is a loss of 1 ATP between these two shuttles, right? And aspartate as a molecule can act as an excitatory neurotransmitter. ठीक है? ये भी एक फंक्शन है इसका. ये है aspartate. This is an example of acidic amino acid. तो acidic amino acid मतलब दो acidic group हैं, तो दो carboxyl group हैं. ये तो है functional group. ये है alpha carbon जिसके साथ amino group attached है. ये alpha amino group है. ये alpha carboxyl group है. This is the general structure of the amino acid. This is the R group, which also contains an additional carboxyl group. That is why aspartate is an acidic amino acid. Iska corresponding amide is asparagine. This is asparagine. This is asparagine. कैसे बना asparagine? ये जो R group का carboxyl group है, उसमें आपने OH को replace कर दिया एक amide group से. So this becomes asparagine. अब asparagine के बारे में हम दो शब्द देख लेते हैं. Asparagine is an amide of aspartate formed from aspartate by the enzyme asparagine synthetase. अब amino group चाहिए, वो कहाँ से आएगा? Glutamine here will be the source of amino group for synthesis of asparagine. ठीक है? Asparagine is broken down by the action of asparaginase and it is transaminated to form oxaloacetate. ठीक है? और clinical significance है asparaginase का. Asparaginase is used as an anti-cancer drug. देख लो, इसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, just to show you, क्योंकि ऐसे हम
एस्पैराजीन कैसे बनेगा? ऑक्सैलोएसीटेट से एस्पार्टेट बनेगा पहले, ऑफ कोर्स अमाइनो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होगा, पीएलपी विल बी इन्वॉल्व। एस्पार्टेट को हम अब जब एक और अमाइनो ग्रुप देंगे तो एंजाइम विल बी एस्पैराजीन सिंथेटेज है तो एटीपी लगेगा एक, और अमाइनो ग्रुप जो है एक्स्ट्रा वो कहाँ से आ रहा है? ग्लूटामीन। ग्लूटामीन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट। अब एस्पैराजीन का ब्रेकडाउन कैसे होगा? ये ऐसे होगा एस्पैराजीन I'm sorry for the break. So asparagine will be broken down by asparaginase. We'll remove one amino group to convert it into aspartate. Aspartate will undergo its normal transamination to get converted into oxaloacetate. The amino group will be given off to glutamate. Again, PLP will be involved here. Glutamate will go on to the liver for urea synthesis. Okay, this was about aspartate and asparagine. Let's go on to the next acidic amino acid, that is glutamate. We have said enough about glutamate and glutamine, but anyway, let's go ahead now with this. Pivotal role in ammonia metabolism. Glutamate is an important part of the tripeptide, the atypical tripeptide glutathione, where it provides the gamma carboxyl group to form the atypical isopeptide bond with the alpha amino group of cysteine. Glutamate itself as an amino acid is an excitatory neurotransmitter along with aspartate. मैंने अभी बताया था आपको aspartate भी है. Glutamate itself can be a neurotransmitter, but glutamate can undergo decarboxylation to form GABA, which is another neurotransmitter, but this is an inhibitory neurotransmitter. Glutamate is an excitatory neurotransmitter, but GABA, which is a modification of glutamate, it undergoes decarboxylation at its alpha carboxyl group and it forms GABA. GABA is gamma amino butyric acid. Enzyme is glutamate decarboxylase, will require PLP and magnesium. Also, glutamate is involved in the maturation of certain clotting factors, where there is post-translational modification of certain glutamate residues to form gamma carboxy glutamate. Generally प्यार से हम इसको कहते हैं there is glue to GLA transformation. ठीक है, अभी दिखाती हूँ. Or of course glutamate is required for synthesis of N-acetyl glutamate. ये तो आपको पता ही है. ये रहा glutamate बीच में. It can form glutamine by glutamine synthetase, come back to glutamate by glutaminase, ultimately forms alpha ketoglutarate, right? This is again a reversible reaction. Alpha keto will form glutamate by glutamate dehydrogenase. Glutamate can form back alpha keto by transamination reaction. और बीच में चुपके से क्या करता है ग्लूटामेट, वो जाके गाबा भी बना देता है by undergoing decarboxylation. This enzyme requires PLP and magnesium. And GABA is a inhibitory neurotransmitter, whereas glutamate itself is an excitatory neurotransmitter. Okay, synthesis of NAD and acetyl glutamate, which is the most important activator of carbamoyl phosphate synthetase 1, which is involved in the first reaction of urea synthesis. So glutamate combines with acetyl-CoA to form an acetyl glutamate. And arginine, one of the intermediates of the urea cycle, one of the most important intermediates of the urea cycle, is a strong activator of this synthesis. ठीक है? N-acetyl glutamate synthase, ठीक है? Is activated, allosterically activated by arginine. वो जो मैंने आपको बताया था, हम glue to GLA का बात कर रहे थे. Clotting factors are synthesized by the liver
And clotting factors are one of the examples of functional plasma protein. Think of more functional plasma proteins, मतलब जो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है और उनका फंक्शन भी प्लाज्मा में ही है. ठीक है. So clotting factors are an example of functional plasma proteins, and some of the clotting factors, they undergo activation or maturation as a example of post-translational modification. मतलब बन गए, ट्रांसलेशन हो गई, उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है. क्या मॉडिफिकेशन हो रही है? Certain specific glutamate residues in the polypeptide chain undergo carboxylation reaction. Carboxylation का क्या मतलब होता है? You are adding a carboxyl group, CO2 group to the molecule. ठीक है. तो ये होता है स्पेसिफिक ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज पे, और ये भी होता है गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा गामा. ये है गामा कार्बन जिसपे ऑलरेडी एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, बिकॉज इट इज एन एसिडिक अमीनो एसिड. इस पे हम एक और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच करेंगे. क्यों कर रहे हैं ये हम काम? क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट. तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे तो दे विल कीलेट कैल्शियम व्हिच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, राइट. और क्लॉटिंग में क्या चाहिए होता है? क्लॉटिंग करने के लिए वी नीड कैल्शियम. तो फॉर important is here, what is important here? You need a lot of calcium ions for clotting. So these specific glutamate residues have undergone carboxylation at the gamma position, gamma carbon atom of the amino acid, to get an extra carboxyl group so that they can bind to calcium, and which will bring about the clotting, the rest of the reaction for the clotting mechanism. The enzyme here is carboxylase. If you remember, carboxylases bring about carboxylation, addition of a carbon atom. Do you remember the example where you have read this? Yes, that's right, in lipid metabolism, lipid synthesis. Acetyl-CoA converts to mevalonate, and the enzyme is acetyl-CoA carboxylase. The coenzyme there will be biotin. Now, this example is an exception to that. This carboxylase does not require biotin. Instead, it requires vitamin K. Vitamin K hydroquinone is the reduced form of vitamin K, which gives off its reducing equivalence during this carboxylation reaction. Okay, and itself is converted into its own oxidized form, that is epoxide. Now, vitamin K is a vitamin which is not synthesized in our body, so it has to be regenerated back, which is done by the reductase enzyme. ठीक है, which uses NADH as its reducing. NADPH होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत है. NADPH होना चाहिए था बच्चों. This should be reducing equivalents always come from NAD. I'm so sorry, I did not see this गलती here. I'm so sorry. Reducing equivalents are always given off by NADPH or glutathione. और कोई सोर्स नहीं है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस का जनरली हमारी बॉडी में. इस समय मुझे कोई एक्सेप्शन याद नहीं आ रहा है. तो जब भी कहीं भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस देने की बात आती है तो वो NADPH देता है. ये NADH नहीं, यहाँ पे P और ऐड करो, P और ऐड करो यहाँ पे, ठीक है, या ग्लूटाथियोन. तो यहाँ पे NADPH will be giving its reducing equivalents to convert vitamin K, the oxidized form of vitamin K, back into its hydroquinone form. This is how this reaction takes place. Glu to gla, glutamic acid to gamma carboxyglutamic acid, and thus the clotting factors which have this undergo this reaction, they become mature enough to chelate calcium and bring about clotting. Okay. And warfarin, there are more examples like warfarin which act as vitamin K antagonists. They inhibit this enzyme which brings about the reduction of oxidized vitamin K back to its reduced form. They are used as blood thinners. Okay, now glutamine, which is an amide of glutamate.
Glutamine synthesis occurs in the liver, brain, muscle, and in the mitochondria. Enzyme will be glutamine synthetase. Synthetase hai. It will require ATP. It is the transport form of ammonia from the brain and also acts as a reservoir of ammonia. Acts as a reservoir of ammonia. It acts as a donor of ammonia in many reactions. For example, one example is synthesis of purines and pyrimidines. Any other example? अभी हमने किया था ग्लूटामीन ने अपना अमाइनो ग्रुप दिया था. किसको दिया था? अभी किया था. सोचो सोचो सोचो. चलो अच्छा. Apart from these actions, it also can act as a buffer in the renal tubular cells by liberating ammonia. And ammonia will combine with the H ions to form ammonium. Okay? So it can act as a buffer in the renal tubular cells. And degradation of glutamine will be, there's no prizes for guessing, glutaminase. Glutaminase will cleave off one ammonia group to convert it back into glutamate. So this was about the acidic amino acids. Now let's start with the basic amino acids. Now there are three of them. Lysine. बेसिक का क्या एसिडिक में क्या हुआ था? एक एक्स्ट्रा अमाइनो एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप था. बेसिक अमाइनो एसिड्स में क्या होना चाहिए? एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होगा. तो दे आर लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है. जो ये अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अल्फा अमाइनो ग्रुप. ये अल्फा है, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन. ठीक है, ये एप्सिलॉन जो ई लिखते हैं ना टेढ़ा अजीब सा ई, ये एप्सिलॉन है, उस पे जुड़ा हुआ है ये एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप. ठीक है, तो ये है लाइसिन. दिस इज आर्जिनिन. अगेन दिस इज द अल्फा ग्रुप, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. बट इसके बीच में यहाँ अमाइनो ग्रुप है, नाइट्रोजन है यहाँ पे. ठीक है ना, एमिनो ग्रुप आ जाता है. तो दिस होल is the guanidino group. Arginine is special because of its guanidino group, which is this. Sorry, ये सारा का सारा जो है ये guanidino group है, ये सारा. ठीक है. And histidine, इस बेचारे का कोई ना वो नहीं है. ये बेसिक अमीनो एसिड में भी आता है, ये एरोमेटिक में भी आता है, क्योंकि इसके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है which is known as imidazole group. ठीक है. बेसिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दी फंक्शनल कार्बोक्सिल अमाइनो ग्रुप व्हिच इज द अल्फा अमाइनो ग्रुप, इट आल्सो हैज these two nitrogens here in the imidazole group. So it comes under basic amino acids as well, and since it is a cyclical structure, it is also classified as an aromatic amino acid. And as you know and should never forget that histidine and arginine both are semi-essential in diet wise they are both semi-essential. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, मैं अल्फाबेटिकली चलूंगी. तो पहले हम आर्जिनिन की बात करेंगे, फिर हम हिस्टिडीन की बात करेंगे, फिर हम लाइसिन की बात करेंगे. ठीक है. Okay, here goes. So let's talk about arginine first. Arginine के बारे में जितना कहें उतना कम है, right? It is a semi-essential amino acid. As I told you, it contains guanidino group, formed during the urea cycle and split into urea and ornithine by the action of arginase. It is a glucogenic amino acid, and catabolism of arginine ultimately gives rise to alpha-ketoglutarate with ornithine as an intermediate. ठीक है, तो ornithine बनता है. ornithine है, बात बहुत कर रहे हैं, but we will be talking about ornithine later. ठीक है. It is not a primary standard amino acid because it is not a part of any protein. क्यों नहीं है प्रोटीन का पार्ट? क्योंकि बेचारे ऑर्निथिन के लिए कोई कोडॉन नहीं बनाया नेचर ने, तो ये ऐसे ही रह गया. कोडॉन होता तो ये भी पार्ट हो जाता हमारे प्रोटीन्स का, बट सिंस इट डज नॉट हैव अ कोडॉन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी कोडेड और कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है. अच्छा, आर्जिनिन bioornithine is involved in synthesis of polyamines like spermidines, spermine and futricin. There are more, but just to begin with, these are the names of polyamines. We will be talking about polyamines in our next class. Okay.
Of course, you can't talk about creatine and not talk about arginine. It is involved in the synthesis of creatine along with cysteine and SAM. If you remember, the guanidino group is given by arginine. Of course, glycine is also involved in creatine synthesis. It is a precursor for nitric oxide, which is an important molecule. And deficiency of arginase, of course, will lead to elevated levels of arginine in the blood and urine. तो hyperarginemia हो जाएगा. Okay. तो arginine के दो major pathways हैं. एक तो undergoes breakdown or splits into urea and ornithine by the action of arginase, which is happening in the liver cells, right? Urea is formed and it is thrown out as nitrogenous waste. दूसरा उसका pathway है, it undergoes and forms nitric oxide, and the enzyme here will be nitric oxide synthase. And nitric oxide is an important molecule as far as vascular health is concerned. Okay. पैथोफिजियोलॉजिक में क्या हो रहा है, कभी कभी इनोस नहीं है तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा है, तो देयर मे बी वैस्कुलर डिसफंक्शंस. आर्जिनेज जब ये नहीं हो रहा है तो आर्जिनेज का एक्शन बढ़ जाएगा, ऑर्निथिन बनेगा, देयर विल बी एलिवेटेड production of polyamines and proline. This may lead to vascular stiffness. We will talk about polyamines later and proline, of course. Okay. Before we go further, let's talk about, for 1 minute, we'll talk about arginase. Arginase has two isoenzymes, arginase 1 and 2. Arginase 1 का तो इकलौता function है यूरिया बनाना. This one splits the arginine molecule into urea and ornithine. End of it. Okay, and it's present only in the hepatocyte. Arginase 1 is present only in the liver, nowhere else. Whereas the second isoenzyme, that is arginase 2, is present in many other organs, but mostly in the kidney and the prostate, but also found in macrophages, lactating mammary glands and brain. ठीक है. और ये करता क्या है? It is implicated in the regulation of intracellular arginine or ornithine levels. ठीक है. तो अगर कभी यूरिया साइकिल नहीं चल रही है because of absence of arginase, arginase 2 may be present. ठीक है. It may be present. Okay, this is not for you. The only thing I want to show you here is arginine के दो ही metabolic pathway हैं, एक तो endo बनाने का, दूसरा split होके ornithine और यूरिया बनाने. अब let's talk about nitric oxide. Nitric oxide can come as a short note to you. ठीक है. Nitric oxide कैसे बन रहा है? Arginine से बन रहा है. Arginine will undergo action of nitric oxide synthase to form nitric oxide and citrulline. This enzyme is very unique. एक तो इसके 3 isoenzymes हैं, plus इसको बहुत सारे coenzymes चाहिए. Let's see. So synthesis by nitric oxide synthase. Nitric oxide is synthesized when L-arginine is converted to citrulline by the nitric oxide synthase. इसके 3 isoforms हैं. Nitric oxide synthase के 3 isoforms हैं, N-NOS, E-NOS and I-NOS. ठीक है. अभी आगे बात करते हैं. Nitric oxide synthase. These synthases are a family of enzymes which catalyze the production of nitric oxide from L-arginine. Nitric oxide is produced in mammals by the calcium calmodulin controlled isoenzymes. They are controlled by calcium calmodulin signal pathway. There are 3 isoenzymes: eNOS, which is coming from the endothelial site, nNOS is from the neurons, and iNOS is inducible isoenzyme. These are constitutive, this is inducible, mostly involved in immune
responses, and it requires so many cofactors, coenzymes. NADPH, it will provide the reducing equivalence. FMN and FAD will transport the reducing equivalence, and tetrahydrobiopterin is also required for its activity. And nitric oxide synthesis, they are dioxygenates, मतलब ऑक्सीजन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वो यूटिलाइज कर लेते हैं. ठीक है. Okay, this slide just shows how arginine is being split. So ये वाला N और ऑक्सीजन का एक O forms NO, and the other atom of oxygen is utilized to form citrulline. So NO, enol और endothelial, I'm sorry. यहाँ पे हम endothelial nitric oxide synthesis दिखा रहे हैं because these are the endothelial. This is the vessels, artery. इसका endothelium में base है ये. ठीक है. नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा तो इट हैज पैराक्रीन इफेक्ट. नाइट्रिक ऑक्साइड हैज पैराक्रीन, मतलब अपने आसपास की जो वैल्यू है उसको अफेक्ट करता है. एंडोक्रीन होता है, ऑटोक्रीन होता है, पैराक्रीन. पता है ना आपको? एंडोक्रीन मींस फार ऑफ प्लेसेस पे इफेक्ट करेगा. पैराक्रीन मींस क्लोज बाय. ऑटो मतलब अपने ऊपर ही करेगा. ठीक है ना. तो ये पैराक्रीन इफेक्ट होता है एंडो का. So, few lines about nitric oxide. Again, it can come as a short note. It is an important cellular signaling molecule, also known as the endothelium-derived relaxation factor, or EDRF. It helps modulate vascular tone, insulin secretion, airway tone, and peristalsis. Also involved in angiogenesis and neural development. It may function as a neurotransmitter. And how does it act? It acts via guanylate cyclase and cyclic GMP to activate certain protein kinases. Okay? It acts as a strong vasodilator of cerebral, coronary, renal and muscle arteries. ठीक है? तो क्योंकि ये vasodilator है, that is why it helps in maintaining the perfusion of these organs and avoid any ischemia to these organs. Vasodilate करके रखेगा, मतलब ल्यूमन बड़ा रहेगा तो ब्लड फ्लो इजी होगा. अगर कोई प्लाक भी बन रहा होगा वेसल्स में, बिकॉज ऑफ द vasodilator इफेक्ट ऑफ NO, वो प्लाक कंप्लीटली अक्लूड नहीं करेगा ब्लड वेसल के ल्यूमन को, तो ब्लड सप्लाई होती रहेगी इन ऑर्गन्स को. ischemic stroke या ischemia नहीं होगा. Ischemic damage to these organs will not happen. Apart from that, it can maintain normal blood pressure. It is involved in the release of these hormones from the brain. And as I told you, it has a immunomodulatory function as well by the inducible NOS. Macrophages also produce NO as a free radical for killing microorganisms. But that is by INOS action, inducible nitric oxide synthase. Now coming to the second basic amino acid, that is histidine. Again, it is a semi-essential basic amino acid, and as I had told you, it contains an imidazole group or imidazole ring in its structure. Ring है, इसलिए वो aromatic के अंडर भी classify हो जाता है. ठीक है? Most important thing about histidine is because or by virtue of presence of histidine in so many proteins, especially in the plasma proteins and the hemoglobin, these proteins can act as buffers. कैसे? Let's jog your memory. Let's jog our memory. पढ़ा है आपने जब आप लोगों ने buffering action पढ़ा था, acid base balance पढ़ा था कि heme acts as a buffer. So by virtue of presence of so many histidine residues in all the alpha and beta polypeptide chains of heme can act as a buffer. कैसे? क्योंकि
pKa of histidine का R group जो है that is 6.1, which is near the physiological pH of 7.4. That is why histidine can act as a buffer. So any protein or any polypeptide chain which contains a lot of histidine residues can act as a buffer. Okay. Again, histidine is glucogenic in nature, which gives rise to glutamate, which is ultimately transaminated to alpha ketoglutarate, which is an intermediate of TCA cycle, and it is also involved in one carbon transfers. कैसे? ये आप फिर भी डिटेल में पढ़ोगे, पर मैं छोटा सा बता देती हूँ यहाँ पे आप. Figlu. देखो, what is Figlu? Formimino. It is quite a tongue twister actually. Formimino glutamic acid. Short is Figlu. It is an intermediate in the catabolism of histidine to glutamate, and it serves as a marker for the intracellular levels of folate. So Figlu test, it acts as a marker for intracellular levels of folate. मैं अभी आपको रिएक्शन दिखाती हूँ, आपको याद नहीं करना है, but आपको पता होना चाहिए. Figlu test is used to identify deficiencies of vitamin B12 or folate, and generally Figlu gets, the levels of Figlu are increased because of folate trap. Let's see how. अभी आएगा. हाँ, यहीं पे दिखाती हूँ. Histidine metabolism कैसे हो रहा है? Histidine acted upon by histidase, उससे क्या हो रहा है? अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है, डीएमिनेशन हो रही है, कन्वर्टेड इनटू यूरोकैनेट. यूरोकैनेट acted upon by यूरोकैनेट dehydratase और यूरोकैनेज, एक ही बात है. वाटर इंक्लूड हो रहा है, तो इमिडाजोल प्रोपियोनेट बनता है. इमिडाजोल प्रोपियोनेट में अगर हम और वाटर ऐड करते हैं तो बन गया एन फॉर्मिनो ग्लूटामेट और फिग्लू. ठीक है. अब ये एन फॉर्मिनो ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूटामेट. एंजाइम इज ग्लूटामेट फॉर्मिनो ट्रांसफरेज. ठीक, ट्रांसफरेज है तो इसको, ये फॉर्मिनो ग्रुप को ट्रांसफर करना है. किसको ट्रांसफर करेगा? द एक्सेप्टर ऑफ दिस फॉर्मिनो ग्रुप इज टेट्राहाइड्रोफोलेट. Tetrahydrofolate will take up this group and form N5-formamino tetrahydrofolate, which is part of the one carbon transfer group. ठीक है. मान लो tetrahydrofolate absent है, मतलब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो this will not be present here. यदि ये नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा. तो क्या होगा? N-formamino glutamate will increase in concentration, क्योंकि it cannot be metabolized further to glutamate. The only reason is deficiency of folate. और फोलेट की डेफिशिएंसी कब कब हो सकती है? एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है फोलेट की, एक रीजन तो है ये. दूसरा रीजन है अगर B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है. उसको क्या कहते हैं? फोलेट ट्रैपिंग कहते हैं, कि फोलेट हैज बीन ट्रैप्ड एज टेट्राहाइड्रोफोलेट. वो रिएक्शन अलग है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. एक्चुअली डिटेल में आप जब आप लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ेंगे तब वो डिटेल में बताया जाएगा, बट सिर्फ समझाने के लिए यहाँ दिखा रही हूँ. सो जब फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, Figlu will increase in concentration, and that is why this test is used for assessment of levels of folate and B12 in the body. ये पहले करते थे जब हमारे पास डायरेक्ट एस्टिमेशन के मेथड्स नहीं थे. अब हम डायरेक्टली फोलेट और B12 मेथड्स के लेवल्स में एस्टिमेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में. बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट पहले नहीं होता था. तो दिस वाज द ओनली वे टू डिटेक्ट डेफिशिएंसीज ऑफ फोलेट एंड B12. ओके, तो ये जब अगर रिएक्शन कंप्लीट होगा तो Figlu gets converted. Formamino group will be given off to THF, tetrahydrofolate, and it will
get converted into glutamate. Glutamate undergoes transamination to form alpha ketoglutarate. ये NADP वजह नहीं क्यों दिखा रहे हैं, NADH होना चाहिए था. अच्छा ये भी हो सकता है, ठीक है. NAD क्यों glutamate dehydrogenase can use both NADH and NADPH. Okay, so this was about histidine metabolism. Now inborn errors of histidine metabolism कुछ भी नहीं है, benign है. हिस्टिडीनिमिया होता है और यूरोकैनिक एसिडूरिया होता है. हिस्टिडेज नहीं होगा तो हिस्टिडीन will get elevated obviously, और यूरोकैनेज नहीं होगा तो यूरोकैनेट get elevated. बस यही और कुछ नहीं भी याद करो, बेकार दिखा रही हूँ. अच्छा, histamine is an important off product or byproduct of histidine. Decarboxylation of histidine produces histamine, which is very important. Enzyme will be histidine decarboxylase. Decarboxylase है तो PLP will always be there. और histamine करता क्या है? It mediates allergic and anaphylactic reactions and also causes increased acid production in the stomach. Histamine is also involved in smooth muscle contractions, increased vascular permeability, and vasodilatation. All this can lead to, if histamine levels are very high, and if the levels become acutely high, they can lead to an anaphylactic reaction, right? For this, we need to give antihistaminic drugs, or they're also known as in the common languages anti-allergic drugs, which block the histamine receptors and control allergic and anaphylactic reactions. These antihistamine drugs, they also control the acid secretion in the stomach, so they can also be given for treatment of peptic ulcers. Okay, now the last and not the least important basic amino acid, lysine. Lysine is an essential amino acid. It is basic in nature. It does not undergo transamination. It is both glucogenic and ketogenic. Lysine का एक ही काम है. एक तो lysine is present in the polypeptide chain. दूसरा, it undergoes post-translational modification to form hydroxylysine, and both of these, both lysine and hydroxylysine, are major components of the fibrous proteins, which are required for providing tensile strength to the body, like collagen and elastin. They are important components of these proteins. Lysine is also a precursor for carnitine. अब आप ये मत पूछना carnitine क्या है. I hope you remember what carnitine is. अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है lipid metabolism पढ़ाई करें, ठीक है. अच्छा, दूसरा एक और काम क्या है lysine का? टर्मिनल अमाइनो ग्रुप. रिमेंबर मैंने जब अल्फा बीटा गामा डेटा किया था तो एक एप्सिलॉन कार्बन भी आया था, उससे अटैच था एक अमाइनो ग्रुप. this epsilon amino group of lysine is involved in shift-based linkages during various reactions. ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन है जो इन्वॉल्व है in certain reactions. ठीक है, ये मैं आज नहीं बताऊंगा. That you can take it as your homework. Okay, now this was about the basic amino acid, but before we go further, I would like to talk about proline and hydroxyproline, because lysine, hydroxylysine, proline, hydroxyproline, they are basically doing the same function, mota. But proline is not an amino acid, it is an amino acid. Look at its structure. ये amino group नहीं है, ये एक amino group है. Again, इसको हम cyclic structure नहीं बोलते. So this generally does not come under aromatic amino acid. So it is an amino acid. It is not essential, non-essential. लिखना था N में खा गई, sorry. Or it is glucogenic in nature. It forms alpha ketoglutarate and then ultimately forms oxaloacetate. These two are intermediates of the TCA cycle. And again, both proline and hydroxyproline are important constants of the fibrous protein.
कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, इलास्टेज, ठीक है, इलास्टिन। ओके, अब मैं ये दिखा रही हूँ, both proline and lysine undergo post translational modification. ये रहा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, ये रहा राइबोसोम, जहाँ से बन बन के पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर को आ रही है। ठीक है, तो बन गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो ये जो भी अब कुछ होगा ट्रांसलेशन के बाद वो होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल। ठीक, तो अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो भी फ्रेश बन के निकला है फ्रॉम दिस मशीनरी, translational machinery which contains ribosomes and mRNA and lot of many other molecules, specific proline and lysine or prolyl and lysyl residues on our polypeptide chain. Specific prolyl and lysyl residues undergo hydroxylation reaction. और कर कौन कौन रहा है? enzymes will be obviously prolyl hydroxylase and lysyl hydroxylase respectively. और ये करते क्या हैं? They require molecular oxygen, alpha ketoglutarate, ascorbic acid and iron. ठीक है, ascorbic acid यहाँ पे is acting as a coenzyme which brings about the actual hydroxylation of these two amino acid residue. ठीक है, तो ये डाइऑक्सीजनेज हो गए ना, ऑक्सीजन में से हम एक O लेके OH बनाएंगे। ठीक, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, और फेरस इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक। ठीक है, और ये बन जाएगा स्पेसिफिक, these residues are hydroxylated and then they will form this particular slide shows about the collagen form the triple helix. ठीक है, प्रोकोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होता है। ठीक, ये यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन दिखा रहे हैं, ये दिस इज अ हेक्सोज sugar moiety which is showing, this is again a part of post translational modification, but right now we are only interested in the hydroxylation part because we are talking about proline and lysine and they undergo post translational modification to form hydroxyproline and hydroxylysine. This reaction is important सिर्फ दिखाने के लिए कि कहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है। दिस इज प्रोलीन, दिस इज हाइड्रोक्सी। ठीक, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन रिएक्शन जो है, ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। यू शुड प्लीज रीड अबाउट दिस, शुड बी एबल टू टॉक अबाउट दिस, राइट अबाउट दिस। ठीक है, okay, this was about the basic amino acids. Now let's go on to the sulfur containing amino acids. यहाँ सिर्फ दो ही सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, और सिस्टीन जो है वो मिथ्योनिन से ही बनता है। Whereas methionine is an essential amino acid which we have to take in our diet, and it is the only source of, not the only source, डाइट में तो सिस्टीन भी आ जाता है, so they are the sources of sulfur in our body. ठीक है, so methionine is a sulfur containing essential amino acid, it's glucogenic in nature and it is finally converted to succinyl CoA which is an intermediate of TCA cycle. Methionine करता क्या है? It gets converted into cysteine by transferring its thiol group or SH group to serine. देखा, तो सीरीन का स्केलेटन है, उसको थायोल ग्रुप दोगे तो सिस्टीन बन जाएगा। ठीक है, तो सीरीन के कितने काम है? वो ग्लाइसिन भी बना देता है, वो सिस्टीन भी बना देता है, और भी किसी चीज बना देता है, राइट? ओके, methionine apart from being the component of polypeptide chain, apart from getting converted into cysteine by giving off its thiol group to serine, and also being the first or the initial N-terminal amino acid in most of the proteins, it
acts as SAM, S-adenosyl methionine, or active methionine, and the SAM is a donor of methyl groups. So SAM is involved in methyl transfer reactions or transmethylation reactions to form various special products like creatinine, carnitine, choline, epinephrine, lecithin, melatonin, polyamines, etc. List is quite big. Okay. Now let's see what is happening to methionine. सबसे पहले methionine gets converted into SAM, S-adenosyl methionine. Enzyme is methionine adenosyl transfer. अभी adenosine group जो कहाँ से आ रहा है? ATP से. ठीक है. ATP पूरा का पूरा adenosine group दे देगा, form SAM, और जो phosphate groups हैं, जो ट्राइफॉस्फेट पार्ट है, ये ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. तो एडिनोसिन तो चला गया मेथियोनिन के साथ, तो फॉर्म एस एडिनोसिल मेथियोनिन. जो ट्राइफॉस्फेट बचा वो स्प्लिट होके पायरोफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना रहा है. तो इसी वजह से जो एनर्जी मिल रही है ये फॉर्म कर. ठीक है ना. एस एडिनोसिल मेथियोनिन एक्टिव मेथियोनिन, मतलब it has energy. तभी it has energy, that is why it can donate methyl groups to other acceptors. ठीक है. और जब ये methyl group acceptors को दे देगा, enzyme will be methyl transferase, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? S-adenosyl homocysteine. And S-adenosyl homocysteine gets converted back to homocysteine जब adenosine group will be removed. ठीक है. Enzyme will be adenosyl homocysteinase, water molecule आ जाएगा बीच, homocysteine बन जाएगा. Homocysteine can then form back methionine. For this you require methyl tetrahydrofolate and vitamin B12. ये रिएक्शन है. अगर B12 नहीं हो, यदि B12 नहीं हो तो टेट्राहाइड्रोफोलेट या फोलिक एसिड गेट trapped as methyl tetrahydrofolate. तभी हम कहते हैं फोलेट ट्रैप हो गया. या तो फोलेट की अपनी डेफिशिएंसी है तो ये कोई रिएक्शन होएगा ही नहीं, तब पिग्यू इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन. अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, व्हिच इज कोबालामीन, B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा. ये जो रिएक्शन है, होमोसिस्टीन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मेथियोनिन. साथ साथ क्या हो रहा है? ये मिथाइल ग्रुप देना पड़ेगा ना मेथियोनिन को, तभी वो होमोसिस्टीन को हम मिथाइल ग्रुप देंगे तभी वो मेथियोनिन बनेगा. तो ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम टेट्राहाइड्रोफोलेट. यदि B12 नहीं होगा तो ये रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन, विल नॉट अकर एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट विल बी ट्रैप्ड एज मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट. और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है. मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. It has to give off its methyl group. It has to be through this reaction only. It is an irreversible reaction. Can you see this? This is an irreversible reaction. अब तुम कहोगे कि हम मेथियोनिन बना तो रहे हैं बॉडी में, तो इसको हम एसेंशियल क्यों कह रहे हैं? राइट. ये पार्ट हो गया, ये पार्ट समझ में आ गया. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फोलेट ट्रैपिंग का पार्ट समझ में आ गया. B12 नहीं है तो होमोसिस्टीन कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू मेथियोनिन. तो टेट्राहाइड्रोफोलेट will be trapped as methyl tetrahydrofolate. ये पार्ट खत्म. अब दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम होमोसिस्टीन से मेथियोनिन बना रहे हैं तो हम मेथियोनिन को एसेंशियल क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि मेथियोनिन से ही तो होमोसिस्टीन बना. इसी मेथियोनिन से होमोसिस्टीन बना, और कोई तरीका नहीं है होमोसिस्टीन बनाने का. यही एक तरीका है होमोसिस्टीन बनाने का. तो जब एक ओरिजिनल मेथियोनिन होगा उसी से ये होमोसिस्टीन बनेगा, तभी ये होमोसिस्टीन कैन गेट बैक टू बीइंग मेथियोनिन. सो इसीलिए इट इज एसेंशियल. हम स्क्रैच से होमोसिस्टीन नहीं बना सकते, हम मेथियोनिन से ही होमोसिस्टीन बना सकते हैं थ्रू दिस स्टेप, these steps of reaction. Okay, so that is why methionine is essential. And of course B12 is also essential here, otherwise बहुत प्रॉब्लम है बच्चों. ओके,
यही मेरे को दिखाना था। B12 के हमारी बॉडी में सिर्फ 2 रिएक्शन, एक तो ये है वेयर इट एक्ट्स एज मिथाइल कोबैलेनिन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। ये होमोसिस्टीन है, ठीक है, ये मेथियोनिन, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट इसको देगा, ये इसको, ठीक है, मेथियोनिन सिंथेज। ओके, दूसरा रिएक्शन क्या है B12 का? आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो चुका है, आप लोगों का लिपिड मेटाबॉलिज्म भी हो चुका है, दोनों में पढ़ाया गया होगा कि प्रोपियोनिक एसिड सक्सिनिल CoA कैसे बनता है। प्रोपियोनिल CoA gets converted into succinyl CoA. There is a sequence of reactions in which there is one reaction which is catalyzed by adenosyl cobalamin. That is the second reaction for B12. Only 2 reactions for B12. Very easy but very important. ठीक है, चलो आगे। This was about methionine. ठीक है, समझ में आ गया? Okay, now let's go on to its product, cysteine. It is a non-essential sulfur-containing amino acid. Methionine से बनता है using the carbon skeleton of serine. And cysteine is present abundantly in hair and nails and keratin. ठीक है, और ये सल्फर ब्रिजेस जो हैं वो सिस्टीन की वजह से, और ये जो हम फॉर्मिंग कराते हैं अपने बालों की, स्ट्रेटनिंग कराते हैं, ये ऑल थैंक्स टू सिस्टीन एंड दी डाइसल्फाइड ब्रिजेस इट फॉर्म्स विद इट्स डाइमर। डाइमर बनाता है ना, डाइसल्फाइड ब्रिजेस कैसे बनेंगे? जब 2 सिस्टीन मिलेंगे आपस में और डाइसल्फाइड ब्रिज बनाएंगे to form a cystine, which is a dimer of cysteine. This is the firming and the straightening of hair is all thanks to cysteine in our hair. Okay, cysteine भी glucogenic है as methionine, and cysteine के बड़े काम है भाई। ये तो करा ही दिया तुमने, बालों का चक्कर तो करा ही दिया। Apart from that, it is used in the synthesis of glutathione. Glutathione के पास एक GSH मैंने बताया था, जो S है वो cysteine की वजह से, और reducing equivalent भी वो इसी वजह से ट्रांसफर कर पाता है। Also, it is involved in synthesis of coenzyme A. एक और amino acid है taurine, which is a non-standard amino acid. This is also synthesized from cysteine. ये आप सिर्फ नाम याद करें, मैं इनकी वो नहीं दिखाने वाली हूँ, रिएक्शंस नहीं दिखाने, जरूरत नहीं। ग्लूटाथियोन का आपको पता है, ठीक है, वो आपको मैंने दिखा दिया है, वो आपको पता रहना चाहिए। क्रिएटिनिन का आपको पता है, वो आपको पता है, ठीक है, कैसे बनता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथियोन, सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन, they are important, you should know the steps. Can come as a short note, so you should be able to write. ग्लूटाथियोन में तो बहुत कुछ है लिखने को आपके पास, all the functions that you know, you can all rattle off the glutathione and the atypical bond that is formed between glutamate and we talking about all that. But taurine जो है एक non-standard मतलब it does not have a codon, it is not part of any polypeptide chain, but it is used for conjugation with the bile acid. Remember glycocholic acid, taurocholic acid, तो ये taurocholic जो है वो taurine से आ रहा है, ठीक। So taurine can be synthesized from cysteine, which will contain the sulfur group. Now, during the catabolism of cysteine, there are certain intermediates are formed. तो उसमें एक बनता है active sulfur, PAPS, or active sulfur, which is a sulfate donor, and this is formed during the cysteine breakdown. And of course, it forms the dimer with another molecule of cysteine to form a cystine. Okay, synthesis of cysteine कैसे बनेगा? मेथियोनिन से। मेथियोनिन पहले होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होता है, वो हम देख चुके हैं, वो रिएक्शन आपको दिखा चुकी हूँ। होमोसिस्टीन के 2 फेट्स हैं, या तो वो मेथियोनिन में वापस कन्वर्ट हुए, वो आपको पता है कैसे होगा। दूसरा फेट जो मेजर है वो है gets converted into cystathionine
enzyme will be cystathionine beta synthase and it will require PLP. cystathionine बनाने के लिए हमें सीरीन चाहिए क्योंकि सीरीन के ऊपर ही आप सल्फर ग्रुप सल्फाइडल ग्रुप दोगे तो बनाएगा सिस्टीन. सिस्टीन का जो कार्बन स्केलेटन है वो सीरीन की वजह से. ठीक है, तो होमोसिस्टीन प्लस सीरीन will form cystathionine. Cystathionase will split cystathionine into cysteine and alpha ketoglucane. And alpha keto will form eventually succinyl CoA. So this is showing methionine is glucogenic. ये methionine दिखा रहे हैं कि ये methionine जो है glucogenic है क्योंकि eventually alpha keto बन रहा है और फिर succinyl CoA बन रहा है, which are all intermediates of TCA cycle. अब ये cysteine बन गया. Cysteine can be utilized for various purposes. और cysteine का breakdown में भी ये glucogenic है. Okay, now coming to the inborn errors of sulfur containing amino. ठीक है, most of them are benign. Let's see. Cystinuria. क्या क्या इसमें यूरिन में क्या क्या एक्सक्रीट हो रहा है? सिस्टाइन और लाइसिन. This is the most common inherited disease characterized by increased secretion of cystine and lysine. There is elevation of lysine, arginine and ornithine as well along with cystine in the urine. ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि क्यों सिस्टाइन यूरिया है. सिस्टाइन यूरिया कह रहे हैं हम, मगर ये चारों अमाइनो एसिड्स की एक्सक्रीशन हो रही है. क्यों हो रही है? There is a specific carrier system present in the kidney tubules, and this carrier system is in place to reabsorb all these amino acids, namely cysteine, ornithine, arginine, and lysine. इसका जो mnemonic है वो है COL, cysteine, ornithine, arginine, and lysine. एक कैरियर सिस्टम है ये जो चारों अमाइनो एसिड्स को फ्री अमाइनो एसिड्स को रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल. अगर इस कैरियर सिस्टम का डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? चारों अमाइनो एसिड्स विल बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. सो इन cystinuria this carrier system is defective leading to excretion of all these four amino acids in the urine, but नाम हमने इसको cystinuria ही दिया है. और can also be known as, क्योंकि सबसे पहले वही देखा गया था क्योंकि सिस्टाइन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसलिए हुआ था कि सिस्टाइन यूरिया. तो बाद में पता चला लाइसिन भी है तो उसको सिस्टाइन लाइसिन यूरिया बोलने लगे. बट एक्चुअली all these four amino acids are lost in the urine because of this defective carrier system. अगर वो इफेक्टिव रहेगा तो ये चारों को वो 100% रीअब्सॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द यूरिन. ठीक है, डिफेक्टिव रहेगा तो सबको एक्सक्रीट कर देगा. ओके, नाउ सिस्टिनोसिस क्या है? सिस्टाइन स्टोरेज डिजीज है. इसमें क्या हो रहा है? सिस्टाइन क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटेड इन, दिस इज नॉट दैट बिनाइन. इसमें क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे हैं इन दी ऑर्गन्स एंड रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम. ठीक है, सो दीज रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम ऑर्गन्स आर spleen, lymph nodes, liver, kidney, bone marrow. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? There is a defect in the lysosomal function and cystine accumulates in the lysosomes of these tissues, causing deposition of crystals. Okay. Now, before we go any further, let's talk about homocysteine and its effect on the cardiovascular health. As you know, and we have just done, homocysteine is an intermediate in the synthesis of cysteine from methionine, right? Elevation in homocysteine levels can have been implicated in coronary artery disease. So, hyperhomocysteinemia agar hoga, that is an independent risk factor for coronary artery disease. Hyperhomocysteinemia. इसमें क्या हो रहा है? होमोसिस्टीन लेवल्स बढ़ रहे हैं. ठीक है, होमोसिस्टीन लेवल्स अगर बढ़ते हैं तो क्या करेंगे वो? दे विल रिएक्ट विद कोलेजन
to produce free radicals. They will also interfere with the collagen cross-links. This leads to damage to the coronary tissue. And of course, it is also involved in the aggregation of LDL particles and can lead to atherosclerosis. And you know the rest of the story. What will happen if there is atherosclerosis? Okay, now we talk about homocystinuria, autosomal recessive disorder due to defect in the conversion of methionine to cysteine. See, there is increased concentration of homocysteine, so hyperhomocystinemia bhi hoga, homocysteine and methionine in the blood. So there will be hyperhomocystinemia. ठीक है, ब्लड में है और यूरिन में ये सब होगा तो होमोसिस्टिन्यूरिया. ठीक, एलिवेटेड होमोसिस्टीन में एक और जो भी अब मैंने आपको बताया, ये सब अब दोबारा मैं बता रही हूँ. Elevated homocysteine can cause platelet aggregation by activating the Hagman factor, which can cause atherosclerosis or thrombosis, can lead to strokes or myocardial infarctions. Deposition of these can also cause skeletal deformities, mental retardation. Okay. एंजाइम डिफेक्टिव कौन सा है? सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज. इसी की वजह से तो होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि होमोसिस्टीन इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिस्टाथायोनिन. सीरीन के साथ बाइंड करेगा होमोसिस्टीन टू फॉर्म होमोसिस्टीन. होमोसिस्टीन वो सिस्टाइन था. होमोसिस्टीन विल कंबाइन विद सीरीन टू फॉर्म सिस्टाथायोनिन. अगर सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज डिफेक्टिव होगा तो सिस्टाथायोनिन नहीं बनेगा, होमोसिस्टीन एक्यूमुलेट करेगा. ट्रीटमेंट: हाई डोजेस ऑफ विटामिन B6, methionine restricted diet, and of course then cysteine becomes essential. So cysteine supplements have to be given. As I told you, it leads to multi-systemic disorders of connective tissue, musculoskeletal, central, and the cardiovascular system. There can be marfanoid habitus, resembling marfanoid habitus क्यों होगा? Because the person will be tall and thin-built, because there is musculoskeletal defect. Long limbs, high arched feet, knock knees, ectopia lentis, or subluxation of lens. This is very peculiar to this disease. And there can be myopia, glaucoma, optic atrophy, and even retinal detachment. Cystathionuria because of defect in cystathionase. Cystathionase defective होगा तो cystathionin will not be broken down. It will be increased cystathionin, which will be excreted in urine, so cystathionuria. Excess of cystathionin may lead to mental retardation and anemia. Treatment will be again B6, vitamin B6, folic acid, B12 supplements, methionine restricted diet, and cysteine becomes essential. So cysteine rich diet. I think let's stop here, because now this is again a big topic, phenylalanine and its related functions. So I would like to stop here so that we will meet again on Wednesday. That will be my last lecture on amino acid metabolism. Then we will cover all the aromatic amino acids. I think I have not left any other amino acid. I've covered all the amino acids except the aromatic amino acids. So we will cover. Can you name the aromatic amino acids, please? Anyone on the group? या तुम सब सो गए? सो गए क्या बच्चों? हाँ, फिनाइल तो देख लिया बेटा, चीटिंग हो गई. और नीचे टायरोसिन भी लिखा था, चीटिंग हो गई. हाँ, ट्रिप्टोफैन. Yes. Thank you. So let's read about these three. अच्छा अच्छा, बस. Thank you. Enough. I can see you not sleeping. Thank you so much for not sleeping in my lecture. And we'll meet again on Wednesday, 11 to 1. And then we will be finishing off with the aromatic amino acids.
I think that is all which is left. Rest of the amino acids have been covered. उस दिन हम छोटा सा और ये बात करेंगे. देखो पढ़ाया तो मैंने सब कुछ, आता नहीं है सब कुछ. क्या क्या आ सकता है, यदि मैं भूल जाऊं तो प्लीज रिमाइंड मी. वी विल टॉक अबाउट द important questions that can come from this topic on that day. Okay, thank you so much. I hope it was not much of a problem. You were not very happy about the noise part. I'm sorry, but that's the way it is. Thank you for bearing with all this. Thank you so much. God bless you all. Bye and take care. बाहर मत निकल जाना घूमने फिरने, अभी घर में ही रहो. चलो बाय.